Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV Physics Class. So, this is for your this is kinetic lecture 1 on kinetic theory of gas. Basically, so for your class 11 NEET and JEE. So basically, जो है already you know the Charles law, Boyle's law that has been discovered in of the order of 16th century and 17th century, है ना. Look, अब in kinetic theory now is developing in 19th century, है ना. 19th century जो है आपका इन पे एकदम. So kinetic theory जो है basically developed by Maxwell Boltzmann, है ना. Maxwell and Boltzmann. So Maxwell, so basically rapidly moving, kinetic means rapidly moving gas molecules, gas. For case of solid, so in it is in molecules or atoms are rigidly fixed and it is separated by a distance of the order of few angstrom. 1 angstrom equal to जो है आपका 10⁻⁻10 मीटर. एंड फॉर लिक्विड मोलिक्यूल atom जो है interatomic spacing is much more higher than solid, but molecules are moving, है ना. But for gas, so molecules are free, so it is randomly moving. Later I will be discussing in Brownian motion and everything, है ना. So randomly moving. So properties is there. So van der Waal, है ना. Van der Waal discovered this rapidly moving gas molecules is peculiar property. So they are attractive in nature, but when they are of the order of certain angstrom order, then they are repelling. So that due to attraction, the molecules are not sticked. So what is the van der Waal interaction? That force. So typically this force you will be seeing. So van der Waal interaction जो है आपका, so काइनेटिक जो है बेसिकली आपका यहाँ पे आप जो देखोगे आपका आपका मोलिक्यूल का जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एंगस्ट्रॉम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर मोलिकुलर, है ना, डिस्टेंस इन एंगस्ट्रॉम. सो फ्यू जैसे आपका जो है यहाँ पे आपका एनर्जी जो है ना, जो है आपका सिस्टम का एनर्जी, सिस्टम का ये पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो काइनेटिक मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो आप देखोगे अब जैसे टू मॉलिक्यूल्स जो इंटर एटॉमिक, दोनों मॉलिक्यूल का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉल देन सर्टेन एंगस्ट्रॉम, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, है ना. पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. पोटेंशियल एंड पॉजिटिव मीन्स इट इज रिपेलिंग. सो आफ्टर सम टाइम एंगस्ट्रॉम्स इट इज रिपेलिंग. देन जो है आपका बहुत लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग रेंज डिस्टेंस, दिस इज, सो दिस इज नॉट हियर, दिस इज पैरेलली इट इज गोइंग, है ना. सो लॉन्ग रेंज. सो इफ ए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट large distance, then it is also attracted, and it is in this distance, this the attraction is maximum. So there will be, you will be seeing the formation of molecular attraction and molecular bonds and everything. So chemistry में आप पढ़ोगे. So this is typically van der Waal interaction, है ना. So this is applicable for your gas molecules. Okay. Now we are discussing Brownian motion. So in 1827, British botanist Robert Brown has discovered and some in water, then he has put in some pollen, है ना, this pollen, and he is observing with a microscope, है ना. So microscope से उन्होंने देख लिया. So he has seen the pollens are moving randomly inside water. So their motion is biasless and it is moving randomly. So basic properties of, so this motion, according to his name, is called Brownian motion. First he has observed this. So this motion is spontaneous, random, है ना, and जो है आपका anytime it has no direction and everything. So again, so this motion speed increases of this random motion with temperature, है ना. So if temperature is high, motion, so इसका kinetic energy. So typically this Brownian motion is totally due to
kinetic energy of this one. So next, speed increases viscosity with viscosity लेस विस्कस मीडियम में वो बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं. सो विस्कोसिटी इज लेस, मतलब लेस विस्कस मीडियम, मतलब ये इसका ब्राउनियन मोशन इज मोर. और अनदर इज फोर्थ, जो स्पीड इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर डायनामीटर. मॉलिक्यूलर डायामीटर है ना, जितना मॉलिक्यूल का डायमीटर जितना छोटा होगा दैट इट कैन मूव बहुत रैपिडली, है ना. So this is the Brownian motion. Now this is the origin of this motion. Why it's so? So basically these motion are completely kinetic energy. So if system has some energy in this system, kinetic energy, and molecular charge is very much less, so effective, so there is a kinetic energy. So after collision, so there is a not big object. If it is collide, then it is maybe stop and something. But when molecular size is very much small, then net effective or resultant force is not zero. मतलब यहाँ पे जैसे एक दूसरे के साथ कोलिशन हो रहा है, दैट टाइम देयर इज नो नेट रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, मीन्स देयर इज ए रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी और जो नेट रिजल्टेंट कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ड्यू टू दिस पार्टिकल इज मूविंग. So due to very much small size of, so this is the origin of Brownian motion. And now I will be discussing kinetic theory. So using kinetic theory of gas, you can explain Charles law, Boyle's law, Avogadro hypothesis, Dalton partial pressure. So if you using kinetic theory, these laws are proved, then kinetic theory is जो है kinetic theory is valid if you prove. So later I will be proving pressure, gas, Charles law, Boyle's law, everything, है ना. So but before that some assumption is there. What is the assumption? Assumption of, so molecular diameter, molecular size is uniform and very small comparatively with जो है कंटेनर, है ना. सो किसी भी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स इट इज हियर. सो मॉलिक्यूलर जो साइज इसका वेरी मच स्मॉल, obviously this is very much small with respect to the container, and molecular size is uniform. सभी molecule का साइज जो है लगभग यूनिफॉर्म है एक किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए, है ना. सो और जो है आपका दिस इज इट इज मूविंग randomly with speed 0 to infinity. 0 to infinity कुछ भी स्पीड हो सकता है, not obviously not higher than c, है ना. so assumption is speed में vary, जब इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 to infinity, total speed will be 0 to infinity, है ना. so this is the आपका जो है, so this assumption is valid for ideal gas. so obviously this we will be discussing ideal gas, है ना. आइडियल गैस एंड रियल गैस में क्या फर्क है वो भी डिस्कस करेंगे, है ना. सो गैस मॉलिक्यूल्स जो स्पीड एंड एवरीथिंग, है ना. अनदर वन इज collision with the gas molecular is elastic. So two molecules it is collide with each other and total kinetic energy is the constant, है ना. kinetic energy साथ साथ momentum is also constant. So this collision with each molecules are very, it is collision time is very much less. So क्विक कोलिशन होने के बाद ये तुरंत इधर उधर भाग जाता है ना. एंड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम डेंसिटी मतलब किसी भी टाइम पे एक मॉलिक्यूल देखते पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे किसी भी पोजीशन में आप वॉल्यूम में यहाँ पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आप देख लीजिए. So number of molecule per unit volume is constant. That is called molecular density is constant. Now, in molecule, when molecule is colliding, so I will be now discussing the concept of mean free path. है ना? So if molecules are colliding with each other, है ना? So the distance traveled by two molecules within two successive collision is mean free path. है ना? So what it is? So basically concept of mean free path. So mean free path, two atom is colliding with each other, then again another molecules, another atoms are there. So टू एटम एक इसके साथ कोलिशन होने के बाद मान लीजिए इतना दूर डिस्टेंस के बाद उसने इसके साथ कोलिशन किया है. सो दिस इज द मीन फ्री पाथ. ये एक फ्री पाथ, अनदर वन फ्री पाथ. सो टोटल जो पाथ उसको मीन करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, है ना. सो आप एक मॉलिक्यूल का डायमीटर ले लेते हैं. एक मॉलिक्यूल का इसका जो है सिंगल मॉलिक्यूल विद डायमीटर जो है डायमीटर सिग्मा. So its diameter is sigma. Now let's the central molecule is sigma. This is our target molecule. So this is our primary molecule. So it is going. So now let's consider a imaginary cylinder of जो है आपका इसका जो है इसका जो सिलेंडर का रेडियस इज सिग्मा, है ना. इसका रेडियस सिग्मा, है ना. So how it is, so while it is passing, so this is sigma and जो है this portion is, this is sigma by 2, this is sigma by 2, so this is also sigma, है ना. So this portion is sigma. So if a molecule is passing, so in sigma distance, whatever may be the molecule is here, it is colliding with this. So again sigma radius का एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं जहां पे सिग्मा डायमीटर का एक मॉलिक्यूल इट इज गोइंग. सो मैक्सिमम टच कैसे हो सकता है. सो यहाँ पे दिस इज योर सिग्मा बाई 2 दिस पोर्शन एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा बाई 2. इन दैट क्वेश्चन दिस मॉलिक्यूल इट कैन कोलाइड, बट व्हेन इफ मॉलिक्यूल इज हियर इट इज नॉट कोलाइडिंग. सो मैक्सिमम दिस सिचुएशन if molecule is in another gas molecule is here, then it also collide, it can also collide. But maximum outside molecules is 1 and 2 in that condition. If molecule is slightly here, it is not colliding. Okay, so maximum this portion it can collide when total radius is जो है आपका यहाँ पे जो है आपका total ये जो है this is this sigma and it is also sigma, and this molecular diameter is sigma. So in that question, so now consider the volume. So what is the volume? So if molecule is moving with velocity v, so in 1 second how much is the cylinder length of the cylinder is pi sigma square जो है into v, pi sigma square v cylinder. If number of molecules per unit volume, number of molecule per unit volume is n, then number of molecule present in the cylinder is n into pi sigma square v, है ना. So molecule speed is v. So molecule is traveling v distance in 1 second. 1 second में v distance जाएगा. So how much molecules is there? This much molecules is there. So mean free path. So इतना distance जाएगा इतना distance जाएगा, but इस सिलेंडर के अंदर जितना molecules है सबको सब टकराएगा इस सिलेंडर के अंदर जितना molecules है ना. So in that condition, so mean free path is v over in pi sigma square जो है v. So mean free path is lambda equal to, so lambda equal to 1 upon pi sigma square n. Now in that condition we have considered molecules are stationary, मतलब molecule moving नहीं कर रहे, but molecules are always moving here and there just in Brownian motion.
So in that case, there is a correction factor that we will be learning in your BSc classes. So there lambda will be 1 upon root over of root 2 pi sigma square n. So this is the formula of mean free path. When so sigma is the basically diameter of this gas molecule, not radius, diameter of the gas molecule. This is diameter, and n is the number of molecule per minute. So if n is higher, then obviously mean free path, so number of molecules is larger and larger, then mean free path will be reduced. So this is the concept. Okay, now we will be discussing mean velocity, mean square velocity, and root mean square velocity. So basically RMS velocity. This is RMS velocity. So what is the concept? So basically in the molecules in a container, it is a basic assumption we know. It is velocity is ranging from 0 to infinity. Okay, so now consider different molecules C1, molecules with velocity C1, C2, C3. So mean velocity is Vm जो है या Cm ऐसे इसमें करते हैं. So Cm is C1 plus C2 plus C3 by जो है आपका number of जो अगर n number of molecule this is n, this is mean velocity, just average. Mean square velocity जो है this is c square जो mean square है ना, so this is equal to c1 square plus c2 square plus c3 square plus dot dot करके n है ना. Now root mean square, root mean जो है इसका जो है CRMS है ना. दिस इज जो है ये आपका सी जो है आपका मीन स्क्वायर है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर है ना. सो CRMS इज C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट रूट ओवर ऑफ n, इसका रूट ओवर ऑफ दिस, रूट ओवर इसका जो है स्क्वायर उसका एवरेज फिर रूट है ना. You just consider two molecules 20 meter, 40 meter, 80 meter है ना. You consider, so basically consider mean velocity है ना. So mean velocity is 60 जो है ये आपका कितना रहेगा, आपको फॉर सेक ऑफ जो है आपका जो है आपका ये लीजिए है ना 40 60 80 है ना. 40 60 80 कितना होगा 180, 180 बाई 3 कितना है 60 मीटर पर सेकेंड जो है आपका मीन वेलोसिटी. बट रूट मीन स्क्वायर CRMS करेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन C मीन, ये आपको ऑब्वियसली ज्यादा आएगा. बट एक्चुअली रियल सिनेरियो यू नो द वेलोसिटी नॉट रेंजिंग टू इंफिनिटी, बट देयर इज ए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन. So basically velocity speed distribution will be like this. So this is the number of molecules and this is the जो है speed. So this will be obviously Gaussian distribution. So this is this Gaussian distribution. So this is C mean है ना. C mean, this is C mean square, and again this is C RMS. So in later on higher class there is a proof of this velocity and you have to prove this. C mean equal to root over of twice RT over m, the molecular जो है एक मोल का वेट है ना. C मीन स्क्वायर इक्वल टू जो है 8 RT over pi m and CRMS equal to root over of 3 RT over m, and this is important. So अब ये गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है C मीन जो है सबसे मतलब ये जो है इसका मैक्सिमम नंबर एवरेज C मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हायर. तो CRMS स्पीड से जो है आपका
बेसिकली आपका CRMS इज, ये CRMS इज लार्जर देन सी जो है मीन, बट इसमें है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज रिड्यूसिंग, है ना। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन और गैस मोलिक्यूल्स, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी जगह में मिल जाएंगे। सो आपको दिस इज फर्स्ट यूज लर्न, दिस इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज डिस्कवर्ड बाय, सो इट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution. In statistics you will also learning in higher classes, then this distribution MD statistics and everything, है ना, FD statistics, so you will be learning later. So this is Gaussian distribution, है ना, this is Gaussian distribution, बेल शेप, घंटा जैसे, है ना, घंटा का ऊपर में एक ऐसा एक पकड़ लो, ये घंटा जैसे दिखता है ना, दिस इज बेल शेप distribution, but it is going to infinity, है ना, क्योंकि molecule speed ranging to 0 to infinity, but obviously less than c velocity of light, है ना. Now so in earlier classes you have seen the velocity behavior of gas, है ना, बिहेवियर ऑफ गैस, गैस का कैसे बिहेवियर देखिए आपने इन 1661 चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एवरीवन ऑफ यू नोज. सो ये जो प्रेशर ये v प्रोपोर्शनल टू pv कांस्टेंट, मतलब p प्रोपोर्शनल टू 1 upon v, सो और v प्रोपोर्शनल टू 1 upon p when temperature is constant. Okay, so velocity volume of the gas is inversely proportional to 1 upon, मतलब प्रेशर जितना है किसी भी कंटेनर, इसमें इस मॉलिक्यूल में प्रेशर देंगे, सो यू कैन जो है आपका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. जैसे आपने देखा ना बैलून में जो जितना प्रेशर दिएगा तो स्क्वीज हो जाएगा, है ना. सो इफ यू प्रेशराइज इट देन दिस वॉल्यूम विल बी, सो देयर इज ए कंप्रेसर, सो गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके उसको लिक्विडिफाई किया जा सकता है. सो आपका सारे ये प्रिंसिपल काम करता है यहाँ पे, है ना. जैसे आपका रेफ्रिजरेटर फ्रीज में जो है ना, वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल कंप्रेशन की मदद से उसको लिक्विड किया जाता है. सो है ना, सो दिस इज एंड ऑब्वियसली चार्ल्स लॉ. सो एक कंटेनर में इसका टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना बढ़ेगा. सो एक बैलून का ऊपर बैलून का ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैलून धीरे धीरे फूल जाएगा, जहाँ पे आपका पी कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट, बट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो v प्रोपोर्शनल टू जैसे t, सो v प्रोपोर्शनल टू t ओवर p एंड p बाई v जो है, अच्छा सॉरी pv बाई t, है ना, pv बाई t is proportional to, so this is also a constant, pv by t is a constant, so pv equal to, so pv equal to kt, so k is another constant, for 1 mole this is r, है ना. So pv equal to rt and everyone of you is known, है ना. But so here one observation from kinetic theory, it is observed that P1 V1 by T1, है ना, equal to P2 V2 by T2 equal to some constant. This constant जो है आपका ये this constant has been observed. This is जो है आपका KT, so ये जो है आपका KB, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और n नंबर्स जो है आपका नाउ and this constant है ना, so this constant has been observed, this k is proportional to number of जो है आपका n number of molecules, है ना, और n into kb, है ना. this is for one mole this is k equal to r, है ना. so pv equal to rt, this is
PV equal to, this general formula is PV equal to nRT. So for one molecule, one number, मतलब one mole molecule, number of mole here, not molecules per unit volume. Don't get confused with that n and this n, है ना? So this is small, this is small, different types of n. Okay. So दिस इज नंबर ऑफ मोल, है ना? ओके, सो केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा और भी इसमें अच्छे से देखेंगे इसमें. सो नाउ वी विल बी प्लॉटिंग डिफरेंट ग्राफ्स, है ना? एंड दिस ग्राफ्स विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, एंड फॉर योर sake of complete knowledge this graph is necessary. So P varies 1 upon P. So this will be PV equal to constant. This is a hyperbola. PV equal to constant, and another for different temperature. So I have put in T1, T2, T3. Now arrange when the T1, T2, T3, which one is the higher? So here टेम्परेचर, सो जो है आपका, या V वेरीजेस T, इसमें भी लिख सकते हो, तो है ना कि टेम्परेचर इज हायर, जो है आपका वॉल्यूम. सो आपका यहाँ से समझ में आएगा अच्छे से, ये अगर ये भी प्लॉट करेंगे तब भी चलेगा. सो इफ टेम्परेचर हैज वॉल्यूम इज फॉर ए पार्टिकुलर प्रेशर, है ना, इफ टेम्परेचर इज हायर वॉल्यूम विल बी बिगर एंड बिगर, है ना. सो T3 is greater than T2 is greater than T1, है ना. Now चार्ल्स, तो बॉयल्स लॉ से आपका अपने क्या देखे, V वेरीजेस 1 upon P, एंड चार्ल्स लॉ से क्या देखे, V वेरीजेस T. सो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ साथ ये जो है आपका, तो इसमें क्या होगा आपका बॉयल्स लॉ में प्लॉट करने के V वेरीजेस, ये टेम्परेचर. सो डिफरेंट P1, P2, P3. सो इस कंडीशन में आपको क्या देखेंगे, सो P1 इज फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, इफ P1 इज लार्जर देन प्रेशर इज लार्जर, देन वॉल्यूम विल बी लेस. सो हियर वॉल्यूम इज लेस ना, सो दिस प्रेशर विल बी ग्रेटर देन P1, P2 greater than P3. So this is the basic fundamental. So ये इक्वेशन आपको देखना है. Now for ideal gas equation are always valid for higher temperature and lower pressure. Okay. So if you plot PV over T, so this is a constant K. This is constant for ideal gas, but for real gas this is not constant. So real gas it will be like this much, it will be like this much, it will be this much. So if temperature is larger, if T1, this is T2, this is T3, if it is pressure. So if temperature is larger, so it is going to ideal gas. So फॉर आइडियल गैस जो है आपका बिहेव कब करेंगे, हायर टेम्परेचर. देखिए ये हायर टेम्परेचर जितना हायर होगा तो आप आइडियल गैस के नजदीक आ रहे हैं. सो दिस इज आइडियल गैस एंड दिस इज रियल गैस, है ना. सो हायर टेम्परेचर जो है आपका जो है यहाँ पे ये देखिए आप, है ना. सो अब हायर टेम्परेचर जो है आपका, सो हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर. ओके, सो दिस इज नाउ आई यूजिंग दिस फॉर्मूला जो है आपका जो है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ये सब आप प्रूव कर सकते हो, है ना. सो वो आपका जो है P इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर जो है रो सी स्क्वायर, ये सब भी प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बट बिफोर दैट जो वेंडरवाल करेक्शन है ना, सो PV इक्वल टू nRT, और टिपिकली सो
आई विल बी डिस्कसिंग वेंडर वाल करेक्शन, है ना, वेंडर वाल करेक्शन टू आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT, okay, n for 1 mole PV equal to RT. Now if you consider in volume of gas, है ना, when temperature is lower and volume is temperature lower and volume जो है प्रेशर जो है आपका प्रेशर इज बिगर, है ना, प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत कम है तब आइडियल गैस, है ना, बट यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है मतलब गैस मॉलिक्यूल्स आर कंडेंसिंग एंड प्रेशर उसको बहुत कंप्रेस कर रहा है। इन दैट कंडीशन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज जो है आपको धीरे धीरे जो है आपका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम धीरे धीरे आपका एक साथ आने लगेंगे। सो इन दैट कंडीशन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज आल्सो कमिंग इनटू पिक्चर, नॉट इन रियल गैस कंडीशन में, है ना। सो इन दैट केस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है आपका B मतलब पर मोल, है ना, B पर मोल, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो ये आपका जो है तो आपको करेक्शन क्या होगा इन दैट कंडीशन P इंटू V। सो एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना वहां से। सो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम N इंटू B इक्वल टू nRT, है ना। So n per unit per mole, now n is number of mole, है ना, number of mole, NB. Another situation, if you consider this correction has been done by another second correction, this is correction 1, this is correction 2. Another, if you consider the molecules near wall, wall के नजदीक वाले जो molecules हैं इसमें देखिए वॉल का नजदीक वाले जो मॉलिक्यूल्स इट इज अट्रैक्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बैक साइड, है ना। सो यहाँ पे जो है बट इन सेंटर मॉलिक्यूल्स इट इज अट्रैक्टेड बाय एवरीवन। सो नेट अट्रैक्शन इज, सो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स इज 0, बट इन मॉलिक्यूल्स नियर वॉल, इन दैट कंडीशन प्रेशर यहाँ पे जो है ये बाकी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, है ना। सो एक्चुअल प्रेशर फिर कम हो रहे हैं ना कुछ प्रेशर। सो दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, सो ये प्रेशर और एक वेंडरवेल इन्होंने ये किए थे। सो P इक्वल टू और P प्राइम इक्वल टू a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ मोल एंड इसका वॉल्यूम, है ना। सो ये इसका ये वाला जो करेक्शन जो है आपको मतलब इतना जो एक्चुअल मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं ना, इतने सारे मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं वॉल में, तभी तो वॉल में ये मॉलिक्यूल हिट करता है तभी तो प्रेशर जनरेट होता है, बट क्या कर रहे हैं बाकी मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं। सो बेसिकली नेट प्रेशर विल बी रिड्यूसिंग। हाँ, किसी भी वॉल में बैलून कैसे फुला हो रहे थे, बैलून में सारे मॉलिक्यूल्स हीटिंग देयर, तब भी बैलून फुला हुआ रहता ना, गुब्बारा, है ना, फुला हुआ रहता है। बट इफ अनदर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टिंग, है ना, इफ ये जो मॉलिक्यूल को ये जो प्रेशर दे रहे इसको अगर बाहर पीछे से अट्रैक्ट कर रहे, सो दैट मच प्रेशर इज रिड्यूसिंग ना। सो बेसिकली आपको ये वाला प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। सो फॉर रियल गैस सिनेरियो यू हैव टू ऐड P प्लस n ओवर ये ओवर n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर जो है and V minus NB equal to RT. So this is correction term introduced by van der Waal. P plus A, इसका A and B are the constant, है ना। समटाइम इसका आपको है ये निकालने के लिए बोलेंगे, है ना, इसका जो है यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हो ना यहाँ से ये जो है A और ये N का इनका तो इसका तो मोल इसमें है। सो n का इसका जो है डायमेंशन a ओवर v स्क्वायर का डायमेंशन p के बराबर होना चाहिए, n b का डायमेंशन v के बराबर, n का तो डायमेंशन नहीं है, सो b का वॉल्यूम का डायमेंशन होती है। सो फॉर वन मॉलिक्यूल मतलब फॉर 1 मोल
फॉर 1 मोल P प्लस जो है A बाई वी स्क्वायर एंड V माइनस B इक्वल टू RT फॉर 1 मोल. So this is the correction term introduced by Van der Waals. Okay, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए. थैंक यू.